Welcome to my channel Crazy to Learn. Today we will discuss the remaining important MCQs of topic projectile motion. So without any delay, let's start. So our next question is, a projectile is thrown at an angle of 45 degree with the vertical. If K be the kinetic energy with which the projectile was thrown, then the kinetic energy at the top of the trajectory is. So what is given to us? The kinetic energy. The kinetic energy is your K. Okay. Then it is asked to you find the kinetic energy at the top of the trajectory is. So just draw the figure. So this is your horizontal axis, this is your vertical axis, and the projectile is thrown at an angle making with 45 degree with the vertical. So the angle of thrown of projectile with vertical is 45 degree. The projectile is thrown making an angle of 45 degree with vertical. So what will be your angle of projection? Always remember, the angle of projection theta is the angle making with the horizontal. So here the angle of projection will be angle of projection theta is equal to, what will be the theta? Just see, the angle between the horizontal axis and vertical axis, this angle is 90 degree, we know. If this is your 45 degree, this is also 45 degree. Yes or no? So एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जदि देख प्रोजेक्टाइल टा वर्टिकल सहित 45 डिग्री एंगल बनाउची तो हॉरिजॉन्टल सहित भी 45 डिग्री का हेतियो कारण टोटल एंगल टा होची 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टा कोन ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टा होची थीटा जोटा कि होची व्हाट इज द एंगल ऑफ the projectile is thrown with which angle making with the horizontal सहित केते एंगल करी प्रोजेक्टाइल लागु थ्रो करा हिची सेटा होची हमर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो थीटा टा तो एटा थीटा टा केते आसला थीटा हला आसे 45 डिग्री जे 90 minus 45 degree is equal to 45 degree. Okay, how we get here the 45 degree? It's 90 minus 45 degree which is equal to 45 degree. Clear? Theta is your 45 degree. Then it is asked to you, if K be the kinetic energy with which the projectile was thrown, then kinetic energy at the top of the trajectory is. So if you draw the projectile, the trajectory, okay, if you draw the trajectory, then we know at the top of the trajectory the velocity is minimum, so kinetic energy is minimum and potential energy is maximum. And another thing, टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी आम डिस्कसन कर सारे पूर्व वीडियो रे, टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी सब वेलोसिटी मिनिमम हम एंड काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हम. एंड अनदर थिंग जे एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ओनली ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. एट जो वेलोसिटी आसीबो, जो मिनिमम वेलोसिटी आसीबो ड्यू टू ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड इट इज योर v. इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ मेकिंग एन वेलोसिटी v, if the projectile is thrown with velocity v, then your horizontal component is v cos theta, and at the top of the trajectory your horizontal component is your v cos theta. Yes or no? And the vertical component is your v sin theta. Yes or no? So at the top of the trajectory the velocity is only due to the v cos theta, as the vertical component v sin theta is equal to 0. Here the v sin theta is equal to 0. Clear? Why? Because we know at the top of the trajectory, when we throw a object upward at the highest point, at the top highest point, the object will come to its rest. जिते आम गोटे ऑब्जेक्ट को हाइट को थ्रो करूचे एट द टॉप पोजिशन एट द हाइएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0. सो जिते आम अपवर्ड थ्रो करूचे जिते आम वर्टिकल कंपोनेंट बाहर करूचे एट द हाइएस्ट पॉइंट रे वर्टिकल कंपोनेंट सब बेले 0 हो
कहीं ना जो वर्टिकल माने अपवर्ड थ्रो करचे एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाउची तो वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 v sin थीटा 0 हो जो आउ वेलोसिटी जो मु कहि ना जो टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी द वेलोसिटी इज मिनिमम 0 कहनी तो से वेलोसिटी जो मिनिमम वेलोसिटी आसीओ केमिति ना ओनली ड्यू टू द v cos थीटा से मिनिमम वेलोसिटी केमिति आसीओ ना v cos थीटा जो so at the top of the trajectory velocity is equal to velocity कितना होबो ना velocity is your v cos theta and theta is equal to 45 degree so just put here so velocity is v cos 45 degree and what is the value of cos 45 degree 0 half 1 by root 2 root 3 by 2 1 reverse order जदि आसिया तो केते आसी value of cos 45 degree is your 1 by root 2 so if you place here 1 by root 2 v into 1 by root 2 so what is the value you will get v by root 2 so at the top of the trajectory the velocity is equal to v root 2 clear then if k be the kinetic energy with which the projectile was thrown जेतेबेले ऑब्जेक्ट थ्रो करा हितला तार काइनेटिक एनर्जी टा थिला k जेतेबेले थ्रो करा हितला ऑब्जेक्ट तार काइनेटिक एनर्जी टा थिला k which is equal to half m v square राइट और रॉन्ग आम जानी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होची हाफ एम v स्क्वायर किंतु एठी हमर जो आसिला एटा होची वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी तो एटा को मु आमे vt बोली नहीं परिया एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी बोली एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी वेलोसिटी टा केते जनरली वेलोसिटी टा होची v तो काइनेटिक एनर्जी टा हो हाफ एम v स्क्वायर किंतु आमे एटा जो बाहर कले कौन एटा आमे बाहर कले कोनटा ना वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी तो वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज vt टा हमर आसिला v रूट 2 माने टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी तमर वेलोसिटी टा होची v रूट 2 सॉरी v बाय रूट 2 देन आमे कोन बाहर करिया टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी रे हमर टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी रे हमर काइनेटिक एनर्जी रे बाहर करिया सो एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी काइनेटिक एनर्जी टा केते हबो ना एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m vt स्क्वायर यस और नो कारण टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी रे वेलोसिटी टा होची vt सेति पय हेडे v जगह में vt नबाको पड़ियो ओके काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला होची हाफ m v स्क्वायर किंतु एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी हम जेतु काइनेटिक एनर्जी बाहर करछे एट द टॉप ऑफ ट्रैजेक्टरी रे काइनेटिक एनर्जी टा केते हम बाहर करछे तो टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी रे वेलोसिटी टा केते सेटा नबाको पड़ियो तो वेलोसिटी टा होची vt सो एटा हाफ m vt जगह में पकई परिया vy रूट 2 स्क्वायर clear so what will be the answer half m v square by v square is v square root 2 square is 2 clear we can write this thing like this also half into half m v square right or wrong just take half common then we can write like this half into half m v square so at the top of the trajectory kinetic energy is half into half m v square and we know that the half m v square is equal to your normal kinetic energy with which the projectile was thrown we know this half m v square is equal to k is the kinetic energy with which the projectile was thrown so in the place of half mv square I can write k so what will you get here half into k which is equal to k by 2 clear so at the top of the trajectory the kinetic energy is equal to k by 2 so option b is your correct answer so जदि k काइनेटिक एनर्जी रे ऑब्जेक्ट एटा को थ्रो करा हबो k काइनेटिक एनर्जी रे जदि ऑब्जेक्ट को थ्रो करा हबो एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी काइनेटिक एनर्जी टा अधा हे जिवो
जेतिकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्टटा थ्रो करा हितबो जेतिकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्टटा इटु थ्रो करा हितबो एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी काइनेटिक एनर्जीटा एथुर कोन जानले काइनेटिक एनर्जीटा अधा हि जो k/2 काइनेटिक एनर्जीटा होची kटा होची कोन kटा होची काइनेटिक एनर्जी विथ व्हिच द प्रोजेक्टाइल वाज थ्रोन जो प्रोजेक्टाइल जो काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल थ्रो करा हितला सेटा होची k तो एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी कोन हि जाउची काइनेटिक एनर्जीटा अधा हि जाउची क्लियर ऑल यू आर क्लियर then next we will go for the next question our next question is given to you what is given to you find the maximum height time of flight and horizontal range of the projectile when an object is projected with a speed of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical तो first तुम्हें पिक्चर ड्रॉ कर दियो तो प्रोजेक्टाइल टा कौन कहै ना प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मेकिंग एन एंगल 30 विथ द वर्टिकल तो इठे जो प्रोजेक्टाइल टा थ्रो कराई मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ द वर्टिकल पूर्व क्वेश्चन जमी देइथिला मेकिंग एन एंगल विथ वर्टिकल 45 डिग्री एटे सेमिति एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द वर्टिकल देइछि तो आमे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टा बाहर करिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डा थीटा डा सब बेले कौन ना मु बारंबार कहूँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा डा होची द एंगल विथ हॉरिजॉन सहित केते एंगल रे फिंगा हिची तो एटा टोटल एंगल जेटा जदी हम 90 बोली नबा तो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल केते आसीबो एटा टोटल डा होची 90 एटा 30 हेले एटा केते हो 60 हबो सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टा एटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा टा केते हबो 90 माइनस 30 डिग्री 30 टा होची एंगल विथ वर्टिकल ना वर्टिकल विथ वर्टिकल टा देछि किंतु हम बाहर करे अछि एंगल विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टा सब बळे मन रखो विथ हॉरिजॉन्टल सब बळे ओके एटा सब बळे विथ हॉरिजॉन्टल तो तेणु कौन करिया 90 माइनस 30 करके एटा आंदले 60 तो थीटा टा हमर आसला केते थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री क्लियर देन कहि कोन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड सो वेलोसिटी टा केते ना वेलोसिटी टा होची 30 मीटर पर सेकंड क्लियर देन एतिकी गिवन अछि हमको देन हम पचारछि कोन फाइंड द मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट बाहर करिया मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट h रो फार्मूला कौन जस्ट रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन रो मु फार्मूला बुझेइथिली तो मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला टा कौन v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g क्लियर v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g yes or no तो just put the values in the place of v square just write 30 square into sin square theta means sin theta whole square we can write by 2 into g what is the value of g we know value of g is 9.8 meter per second square clear so 2 into 9.8 what is the value of theta now theta is 60 degree the value of theta is 60 degree so sin theta is equal to sin 60 degree what is the value of sin 60 0 half 1 by root 2 root 3 by 2 so the value of sin theta is your sin 60 the value of sin 60 is root 3 by 2 so in the place of sin theta just put root 3 by 2 so 30 square into root 3 by 2 whole square by 2 into 9.8 so 30 square means 900 into root 3 square means 3 2 square means 4 divided by 2 into 9.8 so when we will solve all these things okay when we will solve all these things we'll get value which is equal to 34.43 I calculated sometime before so I am writing here the answer directly you just calculate
and you can check whether the answer is correct or not. Okay, just solve all these things. You know all the how to solve the numerical, just algebraical addition, subtraction, multiplication. सिर्फ खाली तुमको ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करार अच्छी तो कर सॉल्व. सो आसो 34.43. as here the velocity is given to you meter per second and it is asked you maximum height. height means एटा पूरे distance हिसाब रे नबा तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस टा एटा आसे मीटर रे तो 34.43 मीटर. क्लियर. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. the problem is then if you remember the formula then the problem is very easy. तुमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है. ओके, ये प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं है, सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. डायरेक्ट फॉर्मूला में हमको वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल के सॉल्यूशन निकालना है. ओके, जस्ट खाली वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करी सॉल्व करियार अछि. क्लियर. ऑल यू आर क्लियर अबाउट मैक्सिमम हाइट. देन विल गो फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, so what is the formula of the time of flight? The formula of time of flight we know 2v sin theta by g. Yes or no? In the place of v you can also take u, 2u sin theta, 2v sin theta. u और v जो भी लेने से चलेगा, जहाँ भी ले चलेगा, है ना. तो here theta is 60 degree. We already discussed theta is 60 degree. So sin theta is equal to sin 60 degree. The value of sin 60 is √3/2. Clear. And the value of v is 30 meter per second. Yes or no? So just put the values. What will you get? 2 into 30 into √3/2 and the value of g. The value of g is 9.8 meter per second. Clear. So in the place of g just put 9.8. So 2 cancel. So what will you get? 30 √3 by 9.8. So when we all solve all these things, when we will solve all these things, जतला मैं सब solve करे डी न्यूमेरिकल √3 value पके दबो कैलकुलेशन we will get the value 5.3. Okay, I just calculated sometime before. So I remember the value. So it is 5.3. And what is the unit of t? As it is here we are calculating the time of flight and the unit of time we know second. So the time of flight is 5.3 second. Clear. कौन करियार अछि तुम सिर्फ फॉर्मूला लिखिकी से वैल्यू पुट करियार अछि. वैल्यू पुट कले सॉल्व हो गला प्रॉब्लम आ किसी नाही एथे. क्लियर. जीवा आगु. Then next we will go for the horizontal range. So horizontal range. Okay. So what is the formula of the horizontal range? Just remember it is represented as r, we know. So the horizontal range. What is the horizontal range? The horizontal range is v square sin 2 theta by g. Okay, for this problem v is also we discussed. V is equal to 30 meter per second and sin theta is your sin 60 which is equal to √3/2. Yes or no? And the value of g is 9.8. Yes or no? So just v square. And another thing, sin 2 theta is given to you. So what is the value of sin theta? The formula of sin 2 theta is 2 sin theta into cos theta. Okay. So in the place of v square just write 30 square into. In the place of sin 2 theta, what you will write? Sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. So as theta is equal to, here theta is equal to 60 degree, we discussed. So 2 sin 60 into cos 60. So 2 into the value of sin 60 is √3/2 and the value of cos 60
half. So 2 cancel, root 3 by 2. So root 3 by 2, okay, by 9.8. Okay, when you solve all these things, you will get 79.53. Okay, I calculated sometime before, so I remember here. So the answer is 79.53 around you will get. And as it is asked to you find the horizontal range. What is range? Range is the horizontal distance, maximum horizontal distance covered by the projectile. So the unit will be meter. Okay, clear? I think all you are clear about the maximum height, time of flight and horizontal range of the projectile. And in every problem, जब भी problem solve करते ठीक है, notice करथुबो angle of 30 with कहाँ सहित देइछि, vertical ना horizontal. जदि horizontal सहित देइछि angle of 30 means theta टा 30 हबो, किंतु जदि कहला angle of 30 with vertical तो सेटा 90 minus 30 करिके theta टा बाहर करियो हला. ए जिनस टिके ध्यान दैथियो नहले problem wrong हे जिवो. क्लियर? तो नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रॉब्लम.